Hello, Ms. Patel. Yes. So, Ms. Patel, थैंक यू वेरी मच। आज आप वास्तु लाइव शो का हिस्सा हो। हमारा जो वास्तु लिविंग का लाइव शो एवरी सैटरडे संडे फेसबुक और यूट्यूब पे होता है। और बहुत सबसे पहले तो मैं आपको अपनी पूरी टीम की ओर से और हमारे व्यूअर्स की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतना टाइम निकाला कि आप हमारे साथ बातचीत कर सको। और सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और आपको पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप किस तरह से हमारे साथ जुड़े, कैसे हमें जानते हो, जैसे थोड़ा सा बैकफ्लैश में जाके जरा अपनी स्टोरी बताइए कि किस तरह से आपके साथ हमारी पहचान हुई। Of course. Good afternoon, Pallavi ji. How are you doing? I'm fine, dear. Thank you very much for asking. How's everybody doing in your team? Yeah, everyone is fine. And आज हमारे वास्तु लिविंग के जो लाइव शो के व्यूअर्स है, जिसको आप सिर्फ सुन सकते हो, लाइव चैट मैसेज में काफी लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ रहते हैं। बहुत टाइम से कोविड-19 की वजह से हमने लाइव शो शुरू किया था और आपके बारे में ख्याल इसलिए आया है कि पेंडेमिक सिचुएशन में काफी लोग ऐसे हैं जो बड़े-बड़े हौसले उनके टूट चुके हैं और वो फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं, जबकि आप एक फीमेल हो, पूरा बिजनेस एम्पायर अकेले अपने हाथ से मेंटेन करते हो, तो आप ही लोगों का हौसला बढ़ा सकते हो और अपना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर कर सकते हो कि अगर आदमी चाहें तो हर कंडीशन में किसी न किसी तकलीफ में अपना रास्ता ढूंढ सकता है और आगे बढ़ सकता है। डरने से या मायूस होने से रास्ते नहीं निकलते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उससे आपसे बड़ा कोई उसके लिए अनुभवी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। Well, thank you so much, and I would love to share my experience with all the viewers. पहले शुरुआत सुनीता जी कीजिए कि किस तरह से आपकी पहचान हुई हमारे साथ। Well, I got to know you through one of my friends. I went to conference, and I was discussing my financial crisis with him. And he's the one who had given me advice to connect you with you. So we met about 3 years ago. Viewers, I would like all of you to know we met with Pallavi ji. I met with her about 3 years ago. And I'm telling you, since that day, my life has turned 360 degrees around in a good ways. Thank you very much, Sunita ji. आई अप्रिसिएट कि आपने सबसे पहले तो इतने कम वक्त के अंदर जो अभी हमारे साथ रिलेशनशिप के अंदर अचीव किया है, जो आपने अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में, अपनी पर्सनल लाइफ में वास्तु शास्त्र को जिस तरह से इजीली अप्लाई किया है, वो भी एक्सपीरियंस अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते हो तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी ये बात समझने में कि वास्तु की छोटी-छोटी टिप्स को अपने घर में, बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आई जस्ट लाइक मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा आप अपना डिटेल में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ जी, definitely. So I have several hotel and restaurant. With Pallavi ji's expertise in Vastu consulting, I was able to survive through the financial crisis and save all my businesses. And not only that, even today in this pandemic, all my businesses are doing much, much better. I cannot appreciate her enough at all. And Thank truly, you. Pallavi ji, when I spoke to you very first time over the phone, I felt that you are a very caring person. But when I met with you, it was much more than that. And viewers, I would like to let you know she's really down-to-earth person, very professional in her field. You can pretty much talk to her about all your problems. And she's very, very particular about keeping all your information confidential. Thank you very much, Sunita ji. I really love to your appreciation. आप जिस प्यार से, शांति से अपनी बातें बता रहे हो, ये बात सभी लोग जानते हैं कि हमारा काम ही ऐसा है कि प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियल चीजों को रखना, इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। वो बहुत ही मस्त होता है। लोग विदाउट एनी हेजिटेशन अपने क्वेश्चन आंसर शेयर कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं कि सुनीता जी पेंडेमिक सिचुएशन में अपने बिजनेस के अंदर जो भी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस थी, वहां से उनकी पहचान हुई और वहां से मुलाकात हुई। सुनीता जी, मैं ये चाहूंगी कि आपके पास जो इतने सारे होटल हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस है, आप अकेले सब कुछ मैनेज करते हो और जिस तरह से हम लोग मिले
लोगों के दिमाग में सुनीता जी ये बात फैली हुई है कि वास्तुशास्त्र में जुड़ने के साथ सब कुछ तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। आपने 30 साल के छोटे से पीरियड में अपनी सिचुएशन में क्या बेनिफिट पाया है, और कभी भी आपको ये 3 साल में कोई भी वास्तु कंसल्टेंसी में जुड़ने के बाद कोई तोड़-फोड़ करनी पड़ी कि छोटी सी सिंपल टिप्स के माध्यम से और रेमेडी के माध्यम से आपको रिजल्ट मिला? उस पे थोड़ा-सा रोशनी डालें। Well, as far as anything to do with the structural changes, we didn't have to none of it, not even single time. And not only that, Pallavi, I would like to share with the viewer that once I share all the product, regardless it was my personal life, my kids, or anything and everything, I was able to share that with you. And the amazing part of that is that you were able to help me with that. And not only that, you're very, very knowledgeable about your product, how it needs to be installed. Been very particular about getting every product and remedies to be done in perfection. And once I engage you, all my property we visited together, and every remedies that you have done, it worked. It worked. You have done excellent job to save all my properties, and none of it, not a single property we had to go do any wall removal, any construction changes. Viewers, none of it needed to be done. This is my own experience. I'm a single female taking care of my business, but she has been excellent. She knows what she's doing. Pallavi ji, when it comes to any remedies, she's very particular. She's not one of that you're gonna pay the payment, send the product, and then they forget about you. With Pallavi ji, what I have experienced is that she will follow up. She'll make sure that every remedies are done right, every product is installed right the way it should be. I might even sometimes say, is it going to work? And she will tell me, no, you have to done it right in order for to get the benefit of it. And I would like to share one more thing for my daughter. I shared with her, my daughter was not. She was struggling with making decision about what field to take for her future. But I'm very thankful and very proud that today, after Pallavi's consulting with her, she's graduated and become a doctor and even got her job. Very, very proud. And thank you, Pallavi. I can never thank you enough. You are welcome, सुनीता जी. It's my pleasure too. बहुत अच्छा लगा आप अपनी बेटी की कामयाबी पे जितना भी माता पिता खुद आगे होते हैं, जितने भी वो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनके बच्चे जब उनसे भी आगे बढ़ते हैं तो उसकी खुशी सुनीता जी कुछ डिफरेंट ही होती है. और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना एक्सपीरियंस व्यूअर्स के साथ शेयर किया. मैं आपको साथ में सुनीता जी ये बात बता दूं कि आपके साथ तो हम कंसल्टिंग के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन ये जो लाइव शो है वो हमने कोविड-19 की वजह से पैंडेमिक सिचुएशन में मार्च महीने से शुरू किया है. और ये पूरे शो की ब्यूटी ये है कि हम यहाँ पे सिंपल वे से जो लोग अपने घर में आसानी से कर सके ऐसे छोटे-छोटे उपाय बताते हैं. काफ़ी व्यूअर्स ने अपनी लाइफ में वो उपाय अप्लाई करने के बाद यहाँ पे विदाउट एनी हेजिटेशन चैट मैसेज के माध्यम से हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि आज अभी आप जब मुझसे बातें कर रहे हो मेरे फ़ोन पे, जब आप स्पीकर फ़ोन पे हो, उस टाइम पे यहाँ पे एक और मैसेज हमने अपने दूसरे क्लाइंट का रिसीव किया है. शी लिव्स इन न्यू जर्सी और उनका वास्तु के हिसाब से घर बनाया था. और वो कहते, आपकी बात सुन के वो कह रहे हैं मुझे दूसरी लाइन पे कि अगर मेरे को मौका मिले तो मुझे अपने घर में किस तरह से पीस और हार्मनी वास्तु को अप्लाई करने के बाद मिली, उसके बारे में लोगों के साथ शेयर करना है. और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट वीक में हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे. आज तो हम सिर्फ आप ही को सुनना चाहते हैं सुनीता जी. बेटी के लिए जो आपने अपने सक्सेस के लिए बात की, जो आपने अपने बिजनेस के लिए बात की, बिना किसी तोड़फोड़, उनके पास काफी, सुनीता जी आपके पास सारी की सारी जो होटल है वो सारी ब्रांडेड है, राइट, जिसमें हम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं. हाँ, सारी की सारी ब्रांडेड है. और नॉट ओनली दैट, I would like to share one more thing with the viewer. Sure. About my son too. My son is so mature. I could not believe it to my eyes that he is only in 11th grade, but he is way more mature. I really don't have to worry about him. He does his homework. Before, he was so tofani. We call like he was sararati. But सुनीता जी गुजराती है तो थोड़ा सा गुजराती बोलना अलाउड है. हाँ जी, सुनीता जी कंटिन्यू कीजिए आप. हाँ, तो वो
એટલો તોફાની હતો કે જેની વાત નહીં. But now I'm not worried about him at all. He's so mature, gets up every morning, go to school by himself. He drives. I mean, he goes hour away to school driving. So I was worried before. And he had came so much mature about in study too. He got all A+. And I'm so proud of him. Thank you. He's a totally different person. And one other thing I would like to share. There was an incident, I don't know, Pallavi, if you remember or not, because you work with so many people, but I would like viewers to know. There was a piece of land that I was going to buy it. That was after we met. But because my attorney did not send the papers in time, so I lost the contract. The seller got that land under contract with different company. And when I met you asked me to put those paper in certain place, on certain wall, in certain direction, and I placed that. I remember. Once I've done that, you believe it or not, 1 year later on, that contract came back to me. The company who had done the contract to buy that land, it fell through. And today I own that land, and I'm planning to do much more development, huge development on that piece of land. And since that day, the day I got that land back, I have decided whatever I would do, I would not do any changes in my business. Either I had to sell the property, buy the property, or anything without consulting Pallavi ji. थैंक यू मिस सुनी पटेल जो भी आपसे बातचीत करें. व्यूअर्स, मैं आपको ये बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जितनी भी बार हमने लाइव शो में आपको छोटी जो टिप्स दी है, कई बार कुछ जगह पे पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सिंपल आप रख देते हो, और अगर उसके राइट कॉर्नर होते हैं, राइट दिशा होती है उस साल के अनुसार, तो उससे आपके काफी उलझे हुए काम आसानी से सुलझ सकते हैं. और मिस पटेल ने अपना वही एक्सपीरियंस फिलहाल आपके साथ शेयर किया कि कई बार कोई चीज रुक गई हो, काम आगे ना बढ़ता हो, कहीं आप फंस चुके हो, तो अगर उसको राइट वे से, उस दिशा के अनुसार, उस साल के अनुसार, उसके पेपर डॉक्यूमेंट को जस्ट सिंपल प्रॉपर तरीके से रखते हो विद कंसल्टेंट हेल्प, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट तुरंत ही आ जाता है. इसके साथ कुछ और बात मिस पटेल आप कहना चाहेंगे जो व्यूअर्स को अपने एक्सपीरियंस के लिए या उनकी समझदारी के लिए आसानी हो जाए, ताकि वो अपने घर में, बिजनेस में वास्तु को सिंपल तरीके से अप्लाई कर सके? कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, जरूर. What I would like to tell all of the viewers, all the little stuff like Pallavi ji just said about the paper, having a paper on the perfect corner, perfect place of your house or offices, it does make a difference. Think about this, a huge success I've got it just putting that one piece of paper, that contract on one wall, on particular direction. That's all I did, nothing else. There's no additional charge, nothing else. That's what she asked me to do. She goes, you just do that, I've done that. So just putting a paper in place is little stuff. Every tips that she give a mark viewer, just watch it and do it. It will change your life. Like I said, whatever I am today, I'm very proud, but she made it for me. And the last thing I would wanted to say to is that I really believe in Mataji so much that, and I think that Mataji sent Pallavi to help me. Thank you. It's her. She is the one who sent me to help me, to get me out of all this trouble. Otherwise, I would have lost all my businesses. I didn't know what my kids would have done. They could have chosen a different path that was not meant for them. But today, I'm very proud mother. One of them is already doctor. I got 3 kids. My daughter already graduated. She became a doctor. Second one is working toward heart surgeon, and my son is amazing. So, and even my sister followed her, and all her work stuff got it done so quick with just a little thing, nothing here and there, just putting her papers. She had immigration problem, and she just put those papers in one of the corner in her house, and it's done. So, for me, Pallavi has been a blessing. So I'm telling you, viewer, any problem, please, with your heart, go to her and she will resolve it. If she can get me out of this trouble, anybody can be out of the trouble.
थैंक यू वेरी मच सुनीता जी, यू आर वेरी काइंड ऑफ हार्ट। जो आपने अभी बताया कि जैसे ईश्वर होता है वो निमित्त बन के हर आदमी को किसी न किसी रूप से भेजता है, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि यू आर वेरी हार्ड वर्कर। मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, मुझे पता है कि आप अकेले अपने हाथ से काफी सारी चीजें, पूरा बिजनेस एम्पायर संभालते हो। यू आर वर्किंग वूमन एज वेल एज यू आर लाइक हाउस वाइफ ऑल्सो। आप घर भी संभालते हो, बिजनेस भी संभालते हो, दोनों रोल इक्वली करते हो। और मैं खुद ही फीमेल हूँ, तो मैं इस बात पे ज्यादा तवज्जो, ज्यादा ज्यादा जोर भी देती हूँ कि हर व्यक्ति जो होती है उसको हाउस वाइफ के साथ साथ एक एक्टिव वुमन और एक्टिव पर्सनालिटी होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसे गुण जो गॉड ब्लेसिंग है उसके अंदर छुपे हुए हैं, बस उसको उभर के बाहर निकालना जरूरी होता है। और मैंने आपको हमेशा अप्रिशिएट किया है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है। मैं भी सबको ये कहना चाहूंगी कि शी इज वेरी हार्ड वर्कर, और वो काफी बिजी रहते हैं। जितना वक्त अभी आपके साथ बातचीत करने के लिए उन्होंने निकाला है, मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही थैंकफुल है हमारे व्यूअर्स के लिए। उन्होंने सिंपल अल्फाज में आपके साथ कुछ बातें शेयर की है कि कई बार पेपर वर्क को रखने से, छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई करने से, बिना किसी तोड़फोड़, आसानी से, जहाँ पे उपाय है, जहाँ पे सॉल्यूशन है, वहां पे बिना मतलब परेशान होकर तकदीर को दोषी देने के बजाय आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते हो, चाहे प्रॉब्लम क्यों ना हो। प्रॉब्लम आपका हेल्थ का हो, इमिग्रेशन का हो, आप डेफिनेटली अपने लॉयर, अपने डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हो, लेकिन दवा और दुआ साथ में मिलने से कई बार पॉजिटिव रिजल्ट तुरंत आ जाता है। थैंक यू वेरी मच सुनीता जी। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो फिर आपके साथ हम दोबारा एक बार वापस कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। एक आखिरी बार मैं सुनीता जी पूछना चाहूंगी, आपके बारे में बातचीत जो शुरू हुई वो वेल्थ बुद्धा की पोजीशन से शुरू हुई थी, उसके इसी वजह से आप मुझे याद आ गए। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपने जो जो प्रॉपर्टी के ऊपर जहां कहीं भी सिंपल रेमेडी, कोई भी तरह की रेमेडी को अप्लाई किया है, आपने इस बात को रियलाइज किया है कि रेमेडी करने के बाद रिजल्ट जो होता है वो काफी टाइम लग जाता है, तुरंत आ जाता है। किस तरह के एक्सपीरियंस आपने फील किए हैं? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू डियर। No problem. As far as वो वेल्थ बुद्धा, लाफिंग बुद्धा जब भी आपने रखा है, जहाँ पे भी आपने रखवाया है, वो सिंपल सी रेमेडीज है, मगर उसके बाद मेरे को I didn't have to go back and look it up. Some stuff is going to take a little longer, but it's there. At least it's going to prevent anything happening wrong right away. That's all. That's my experience. Once we have those remedies in places, it's a simple, even that one Buddha will protect your assets. And to me, Pallavi ji, if I'm going to spend millions of dollars into the businesses, we're just paying you a drop of water. Let's put it this way. If I can keep ocean to myself and have to pay you as a drop of water, I would rather do that than losing my whole entire ocean. Let's put it this way. That's my experience has been with you. थैंक यू वेरी मच मिस पटेल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दिल से अपनी जो भी बातें थी, अपना अनुभव था, वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। आपने इतना वक्त निकाला, हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार मैं अपने सारे व्यूअर्स की ओर से आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि फ्यूचर में कभी आपको मौका मिलता है, अगर आप ऑरलैंडो साइड आते हो, तो आप यहाँ पे जरूर हमारे साथ लाइव शो का हिस्सा बने। हमें आपके साथ मिलकर लोगों के सवाल जवाब आपके साथ डायरेक्टली करवा के काफी खुशी मिलेगी। थैंक यू वेरी much for your time, ma'am. Appreciation. No, definitely. Thank you. One last thing I want to say is that she's working through these years. She has become my best friend and like a family member. Thank you so much for being a best friend and family member, Pallavi ji. Thank you, ma'am. And thank you. It's my pleasure. To share my experience with everybody. Thank you very much. Thank you, Ms. Patel. Thank you. Thanks for your time.